Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today, Afghan Academic International, in cooperation with Charity Khalsa Diwan Afghanistan, are here to spread awareness of peace as prosperity in the world amongst our audience watching from all around the world. I request Singh Sahib Bhai Gajinder Singh Khalsa Ji to inaugurate the event with his sweet words. ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤੋ ਰਾਖ ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਕੋਈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ तू समर्थ प्रभु, जिवें तैनू चंगा लगे उसी तरह साड़ी रक्षा कर। तुझ बिन और न कोई नदर निहालिया, मैं तेरे तो बिना आज तक कोई और अपनी अखां नाल नहीं वेख्या कि जो तेरे वर्गा होवे। जो जो तेरा हुक्म तिवै तिव होना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। गुजरी राग विच श्री अर्जन देव जी का फरमान, हे प्रभु हे सच्चे पातशाह, जगत विच उसी तरह वर्तारा वरता है जिवें तेरा हुक्म होंदा है। जिथे जिथे तू आप जीवां नू रखदा है, उत्थे ही जीव जा खलोंदे हन। पैगाम सुल बाजहानियान, समुचे संसार लई अमन शांति दा सांझा संदेश। सत्कारयोग साध संगत जो मैंबर खालसा दीवान अफगानिस्तान अते अफगान अकैडमी इंटरनेशनल, अज ऐतवार 6 सितंबर सन 2020 गुरुद्वारा गुरु नानक गरीब निवाज के दीवान हाल ते स्टेज तो अफगान अकैडमिक इंटरनेशनल की आवाज़ नाल आवाज़ मिलाते हुए असी भी अज शांति सांझा संदेश समुचे संसार के भले लिए भेजना चाहते हाँ। दास अपने वालों पंज प्यारे साहबाना के जत्थे वालों संत बाबा अमर सिंह जी अते गुरुद्वारा गुरु नानक गरीब नवाज हिज दी मैनेजमेंट कमेटी, चैरिटरी खालसा दीवान अफगानिस्तान यूके, निष्काम सेवा सोसाइटी यूके, हालैंड अते बेल्जियम, गुरु हरगोबिंद साहिब ट्रस्ट अते समूह अफगान संगतां वालों रल मिल के अकाल पुरख दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूरी विच अरजोई बेनती करते हाँ कि सच्चे पातशाह सारे संसार विच अमन अते शांति बरहाल करे। खास करके साढ़े प्यारे देश अफगानिस्तान विच जिथे शांति की बहुत जरूरत है। अरदास करिए, दोए कर जोड़ करो अरदास, तुत पाणे ता आवे रास। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार, जित दुआरे उबरै तिथै लिहो उबार। अरदास है सच्चे पातशाह, हे प्रभु विकारां विच सबरे संसार नू अपनी मेहर नाल करके बचा लै। जित दुआरे उबरै तिथै लिहो उबार। जिस भी तरीके नाल हो बच सकता हुए इस संसार इस तरह बचा ले। इसी उम्मीद नाल फतेह बुलाउंदा हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Many thanks to Singh Sahib Bhai Gajinder Singh Khalsa Ji. Now I would like to call upon the stage Harmeet Kaur and Divnoor Kaur to give us a speech about peace in the world. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. On behalf of Bhai Mirdana Singh Geet Academy and Shri Guru Angad Dev Ji Education Center, we welcome our respected guests and Saad Sangat. When we wake up in the morning and listen to or read the news, we are confronted with the same sad news: violence, crime, wars, and disasters. I cannot remember a single day when I wake up and there is nothing terrible happening in the world or even the country I live in. We live in a world where education and technology play a big part in our lives. Our thoughts are new, but still no one is safe. No former generation has had so much bad news as we face today.
This constant fear and tension makes every sensitive individual fear and question the modern world. The modern world. It was said years ago that in the 21st century, everyone will know about everything happening in the world. The high technology will help the countries communicate easily and problems will be solved quicker and easier. But little did they know, it is the problem rising that is quicker, not solving. The technology only helped to ruin the world's peace quicker. Peace? What is peace? Nowadays, no one has full peace inside them. Whether it's an 80-year-old man or a 5-year-old child, neither have peace in their heart. A young man thinks, can I pass my exams? A working man thinks, can I fulfill the wishes for my family? An old man thinks, can I have a peaceful death? Gurbani has taught us, Kar sukh vasya bahar sukh paya, which means if you have peace in your heart, you can find peace anywhere. All this leads to conflict with their own minds, which we also call depression. Depression does not care about age, race, religion, or gender. I do not even want to start with peace with women, because that is a never-ending topic. Even though women have stepped over men into today's date, nowhere are they safe in the world. Religions play a huge part in practicing peace in the world. There are Sikhs in Afghanistan who are still fighting to keep their place in the country they were born and raised in. Every religion has given messages for peace and harmony in the modern world, just like Dr. Muhammad Iqbal says, "Mazhab nahi sikhata, aapas mein bair rakhna." Guru Nanak preached his message of goodwill and peace on earth in the early 16th century. The Guru knew that it takes much courage, sacrifice, and effort to make genuine peace on earth a reality. His was the path of love for God and fellow human being. He said, "Jo tu prem khilan ka chaho, sir tali gali meri aaho," which means those who wish to follow the path of love should be prepared to make great sacrifices. So the succeeding Sikh Gurus spoke out discrimination and injustice in society, while preaching a responsible family life based on moral values and truthful living. They preached kinship of all creation before one primal being. Sikh thought stresses, where God exists, there is no selfishness. Where self exists, there is no God. In this life, there must be balance between material ambition and spiritual well-being. 10th Guru Shri Guru Gobind Singh Ji said, "Only that life is good in which the inner battle is fought with determination through patience and wisdom." Another example is the Muslims in China being tortured in the most disgusting ways to change their religion. However, this should be stopped immediately because Gurbani has taught us, "Manas ki jaat sabe ek hi pehchanbo," which means we are all the children of God, Allah, Waheguru, who have different names but are the same. Every day I think, why is it a crime to practice your own beliefs? Why is it a crime to believe in a religion by your own choice? Why is it a crime to live in your own country? Why is it a crime finding your own peace? That's not the end, that's only the start. There's so much happening in the world that we cannot even imagine. But what we can do is keep ourselves and each other around us in peace. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much to the girls for the lovely words. Now I request Bhai Vadhan Singh Ji and Jatha to join us with the beautiful words from Gurbani through his mesmerizing voice. हर कस बजहां नश्व नुमा में ख्वाहत अस्पो शुतरो फीलो तिला में ख्वाहत हर कस जे बराए खेश चीज़े ख्वाहत गोया जे खुदा यादे खुदा में ख्वाहत
गोया ज़े खुदा याद खुदा में ख्वाहत दौलते जावेद बाशद बंदगी बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी दौलते जावेद बाशद बंदगी बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी बंदगी कुल बंदगी बंदगी हर के गाफिल शुद az unadan bavad gar gada bashad magar sultan bavad हर के गाफिल शुद az unadan bavad gar gada bashad magar sultan bavad शौक मौला हज हमा बाला तराज साये बर सरे माफ सराज शौक मौला हज हमा बाला तराज साये बर सरे माफ सराज साये बर सरे माफ सराज बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी दौलते जावेद बाशद बंदगी बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी बंदगी कुल बंदगी कुल बंदगी शौक मौला माने जिक्रे खुदा कांतल सुने चश्मारा की नियाज शौक मौला माने जिक्रे खुदा कातिल सुने चश्मारा की नियाज शौक मौला जिंदगी जान मास जिक्रे ओ सरमाया ईमान मास शौक मौला
हसदा फे बलास आजू में खुश के हसबाए यादियूस आजू में खुश के हक बुनियादियूस आजू में खुश के हसबाए यादियूस आजू में खुश के हक बुनियादियूस आजू में खुश के हक बुनियादियूस बंदगी कुन बंदगी दौलती जावेद माशर बंदगी 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 आजू में बद के शैतानी बवाद आजू में बद के शैतानी बवाद आक़िबत अज़्ब परेशानी बवाद आजू में बद के शैतानी बवाद आक़िबत अज़्ब परेशानी बवाद ई जहानो आ जहान अफसानई ई जहानो आ जहान फुरमाया कौले आबिया कुर्बानिया ई जहानो आ जहान फुरमानिया कौले आबिया कुर्बानिया कौले आबिया कुर्बानिया बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी बंदगी दौलती जावेद बाशद बंदगी बंदगी कुन बंदगी 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 दौलती जावेद बाशद बंदगी 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 बंदगी
रोज शब दर बंदगी पाशंद शाद बंदगी ओ बंदगी ओ याद बात बंदगी ओ बंदगी ओ याद बात याद ओ सरमाया चिश्त सुल्तानी व दरवेशी बिदा चिश्त सुल्तानी व दरवेशी बिदा याद यादियों गर मुन से जानत बाबा यादियों गर मुन से जानत बाबा हर आलम ज़ेरे यादियों गर मुन से जानत बाबा यादियों गर मुन से जानत बाबा हर आलम ज़ेरे बस बुजुर्गी आस अंदर यादें
बुजुर्गी पाया दात कुन बंदगी कर बुजुर्गी पाया दात कुन बंदगी वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी शर्म कुन शर्म कुन शर्म कुन शर्म कुन शर्म कुन शर्म कुन इमले तू संगे खुदरा इमले तू संगे खुदरा यादें सरमाया या इलाही ईद लम्हा शौक़ दे या इलाही ईद लम्हा शौक़ दे या इलाही ईद लम्हा शौक़ दे या इलाही
Asme
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Many thanks to Bhai Vadhan Singh Ji and Jatha. Now I would like to request Pajan Singh Kapoor Ji, Chairman Charity Khasa Diwan Afghanistan, to come up on the stage and say a few words. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Now I come to the topic peace. Peace. It is the most elusive word for my homeland, my beloved country, the land of my ancestors, Afghanistan. Allow me to ask, do we truly understand the meaning of peace? Who truly understands the meaning of peace for Afghans and Afghanistan? Please ask those mothers who have lost their children in this senseless bloodshed and carnage. Please ask those Afghan sisters who have lost their brothers and husbands in shootings, bomb blasts and killings. Or perhaps ask those children who have lost their parents and are living a life of void in orphanage with no promise of love and care or a meaningful future. Or maybe ask those survivors who have been maimed for life and have to live a life of disability with those life-changing injuries. Every family in Afghanistan has paid a very heavy price all these years of destruction, carnage, and have been forced to live a meaningless life. Those who have fled our beloved country in search of peace are missing the fragrance of its soil and want to kiss it before we breathe our last. We pray in our daily prayers to Allah, God, Vaheguru, the Supreme Power. You name Him, He is everywhere. We asked for Sarbat da Phala, meaning wishing good for everyone without any discrimination, race, religion, color or creed. We are all the creations of God. Allah loves its creation and lives in it and manifests Himself through His creation. Allah is merciful and He is the greatest giver. If Allah hated someone, that would never have been created in the first instance. Allah has all meant human beings to live with love and compassion in peaceful coexistence, and we have been living peacefully from thousands of years. This continuous wave of hatred that is resulting in loss of innocent lives needs to stop. If, alas, we had learned the meaning of peace, there would have been hundreds of universities in place of graveyards. We would have doctors, engineers, architects and lawyers instead of boats full of Afghan refugees capsizing in seas and languishes in deportation camps and suffocating in containers with women and children in search of peace, away from home, away from our beloved motherland. Peace is not a commodity that can be imported from abroad. It has to be nurtured from within, from our heart, from our soul. Afghans have to change now for our new coming generations and invite peace into their lives. Peace means no more orphans, no more widows, no more killings, no more destruction. It is not hard to imagine a peaceful Afghanistan with natural resources in such abundance that it will surpass the wealthiest nations on this planet. Khalsa Diwan Afghanistan gives a message of peace, a pagham of aman to all our Afghan brothers and sisters. Now is the time for healing. Now is the time to put an end to hatred and embrace all our countrymen in a hug of love and compassion to build a prosperous Afghanistan. We welcome this initiative of peace and pray that it yields fruit and brings glory and prosperity to Afghanistan. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
I thank Bhajan Singh Kapoor, Chairman, Charity Khalsa Diwan Afghanistan, for such lovely words. Now I request Harkishan Singh Rajvanshi to come up on the stage and say a few words in thanks. वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जनाब सेक्रेटरी साहब गजेंद्र सिंह व मासली ने इन दरबार गुरु नानक दरबार गरीब निवास या जान सपاسگزارم تا اینا زمینه را برای ما مساعد ساختن و بر ما اجازه دادن که تا چریتی خالص دیوان افغانستان و International Academy of Afghanistan came together یک جا شدن و این پروگرام و این زمینه را با ما مساعد ساختن و تا که ما پیغام صلح را به جهان و جهانیان برسانیم. و ما امروز فقط یک گفتنی از جهان دارم تا به افغانستان یک نظر کنن و از افغانا هم تقاضا دارم تا در افغانستان صلح را بیارن. این زمینه را مساعد بسازند تا در افغانستان صلح تامین گردد. باید رهبران ما اینطور یک نظر داشته باشند که از خودگذری خود بگذارند و زمینه را مساعد بسازند تا صلح در سر افغانستان تامین شود. آمین. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਡਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम कलीम अल्लाह तीजा आनंद क्यों का सतगुरु साध अनया में सतगुरु ने